Hello friends, welcome to my channel. With the grace of God, I have more than 8,000 views in one of my video, that is key factor analysis in marginal costing. More than 8,000 views. Thank you so much for such a wonderful response. Now guys, today we are going to take up this margin of safety. Now margin of safety का meaning समझेंगे. We will understand the meaning of margin of safety and we will see two methods of calculating margin of safety. One of the method is very common, but second method of calculating margin of safety is not very popular. And students don't know, most of the students don't know the formula, the second formula for calculating margin of safety. First of all, let us understand what is margin of safety. Here we are. It says that margin of safety simply means by what margin an organization is safe even if the sales falls down. My goodness, what a statement. What a statement. Even if the sales falls down, आपका sales नीचे गया, फिर भी the organization is safe. Your sales are falling down. So till what extent, even if the sales falls down, your organization is safe? The answer is very simple. You cannot afford fall in sales below your break-even sales. Come what may, you have to achieve break-even sales. लेकिन मान लो your actual sales falls below break-even sales. Means your actual sales have gone below break-even sales. It means you are not able to recover the cost also. See, I'll give you an example. Suppose the break-even sales of an organization is 1 lakh rupees. Break-even sales is 1 lakh rupees. So come what may, 1 lakh rupees का sales तो मंगता ही है. But the actual sales of that organization is 10 lakhs. Break even भले 1 lakh है, but actual sales of an organization is 10 lakhs. Very good. So आज वो 10 लाख पे चल रहा है. कितना कम होगा 10 लाख से, कितना कम होगा तो भी उसको परवड़ेगा. 10 लाख पे वो चल रहा है, 9 लाख कम होगा तो परवड़ेगा. See here, sales falls down by 9 lakhs, still he is safe. Even if the sales fall down by 9 lakh, he is safe because actual sales 10 lakhs. Break-even sales 1 lakh. तो वो बंदा यहां पर है 10 लाख पे, कितना फॉल इन सेल्स परवड़ेगा उसको? 9 लाख से अगर वो गया नीचे, अभी 10 पे है, इफ इट फॉल्स बाय 9 स्टिल ही इज सेफ, क्योंकि वो 10 पे है. इवन इफ इट फॉल्स बाय 9 it will come to 1, still he is safe. So he can afford the fall in sales of 9 lakh rupees. अगर वो 10 लाख पे है तो वो 9 लाख रुपए का फॉल इन सेल्स बेयर कर सकता है, बिकॉज अगर 9 लाख से गिरा तो भी वो 1 लाख पे आ जाएगा. So 9 lakh rupees is called as the margin of safety. Means he is safe even if sales falls down by 9 lakh rupees. He is safe even if sales fall down by 9 lakh rupees. Correct?
Okay, let's take up an example to understand this. Now, this margin of safety can be calculated in two manner. Let's take up a sum to understand. Okay, पहले हम एक sum लेते हैं, एक example लेते हैं. See here. Calculate margin of safety from the following. Selling price is 10, variable cost is 6 per unit. So contribution is 4. Contribution is 4. Fixed cost is 40,000. Actually वो 420 पे चल रहा है. तो कितना कम होगा सेल्स? 420 से कितना कम होगा सेल्स तो भी वो ब्रेक इवन पे अटकेगा. Okay, so contribution is 4, fixed cost is 40, actual sales is 420. Now how to solve this type of sums? Margin of safety solve करना है. Method 1, which you all know, is via break even sales. But guys, listen, I am going to teach you via profit also. So margin of safety दो तरह से होगा. एक होगा via break even sales. Because we all saw just now कि margin of safety is given by the formula. Margin of safety is given by the formula actual sales less break even sales. See here. Margin of safety is actual sales less break even sales. ठीक है? चलो, in our question, to find the break even sales, first we need to find the PV ratio. PV ratio is contribution upon sales into 100. Contribution is 4, sales is 10. Here we are. 10 minus 6, 4 was a contribution. Sales is 10. So 4 by 10 into 100 is 40%. This is the PV ratio. Correct? Now, break even sales is given by the formula fixed cost plus profit. Of course, when we are talking about break even, profit is 0. फिर भी I have written it. I know that this is going to be 0. Still I have written it. Sales is fixed cost plus profit upon PV ratio. ये अपने को मालूम है. So break even sales is fixed cost given is 40,000. See here, fixed cost is 40,000. Profit is 0 because when you are talking of break even, we don't want any profit upon PV ratio. Break even sales comes to 1 lakh. See the formula? This formula is of paramount importance. This is repeated so many times. Sales is equal to FC plus profit upon PV. And when we want to calculate break even sales, profit will be 0. Anyways, just remember break even sales is 1 lakh. हाँ तो हो गया sum अभी. Sum is done. Break even sales is 1 lakh. Margin of safety is actual sales less break even sales. Actual sales is 420. Break even sales is 1 lakh. So 320 is the margin of safety. Should I explain this? See, 1 lakh पे break even है, उसका actual sales 420 है, 420 is his actual sales. Even if the sales fall down by 320, from 420 अगर 320 fall भी होता है, still he is safe. He is at 420. Even if it falls by 320, फिर भी वो 1 lakh पे अटकेगा और 1 lakh पे तो safe है. So margin of safety is actual sales less break even sales. 320 is the answer. Now this method 2. I have made this video basically for this method 2. Method 2 हमें ये सिखाता है. Just a minute. Method 2 of calculating margin of safety is profit upon PV ratio. Profit via profit upon PV ratio. This is the second formula. Guys, remember the second formula is profit upon PV ratio. You know, many a times आपका वो जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, वो फेल हो जाएगा. मान लो क्वेश्चन में, मान लो इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट गिवन यू फिक्स कॉस्ट, दे हैव नॉट गिवन यू एक्चुअल सेल्स, उसके बदले बोला है प्रॉफिट. Profit is, some profit is given to you, let us say 128. Bus. Selling price 10, variable cost 6, profit is 128. How will you find out margin of safety using the formula actual sales less break even sales? You cannot find out. एक्चुअल सेल्स इज नॉट गिवन. ब्रेक इवन सेल्स के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए. अगर आपको सिर्फ ये और ये दिया है
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपका जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, वो फेल हो जाएगा. तो यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. सो लेट्स सी. आई वांट द फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. पीवी रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 40%. अभी प्रॉफिट क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट ओरिजिनल क्वेश्चन में तो सेल्स दिया हुआ है, ये तो मैंने अभी कट किया ना, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में सेल्स दिया था. तो सेम फॉर्मूला से मैंने पहले प्रॉफिट ढूंढा, सेम फॉर्मूला से प्रॉफिट ढूंढा. सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. It means the organization is earning 128. So profit upon PV ratio. So 128 divided by 40%. Again, the answer is 320. It matches with the earlier answer. आपको एक्चुअल सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल्स से भी 320 आया, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो से भी 320 आया. बट सर, व्हाट इज द नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला? My friends, sometimes the formula of actual sales minus break-even sales fails. Because you will not be in a position to find out the actual sales, you will not be in a position to find out the break-even sales. अगर इंफॉर्मेशन खाली सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है और प्रॉफिट है, बस, तो हाउ विल यू फाइंड आउट margin of safety? Then you have to use this formula P upon PV ratio. Okay guys, so I have made this video only for you all to understand कि दूसरा फॉर्मूला भी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, और वो है P upon PV. P upon PV. ठीक है. अच्छा, for the last time, logical understanding again for the last time. This is break even sales. उसके नीचे डेंजर जोन है. अगर आपका सेल्स इसके भी नीचे गया तो डेंजर है. 1 लाख से नीचे गया तो डेंजर है. आप 420 पे चल रहे हो. सो बाय व्हाट मार्जिन आप 420 पे चल रहे हो? बाय व्हाट अमाउंट यू आर सेफ इवन इफ सेल्स फॉल डाउन? इवन इफ सेल्स फॉल डाउन बाय 320. 420 है, 320 से कम हो गया, 320 से कम हो गया तो भी कहां पे 1 लाख पे अटकेगा. स्टिल यू आर सेफ. सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज द सेफ जोन. इवन इफ द सेल्स फॉल डाउन बाय दिस मच, ये एक्चुअल सेल्स है, ये ब्रेक इवन सेल्स है, इतना सेल फॉल होगा ना, या 420 है, ये 1 लाख है. सो दिस माइनस दिस, इतना सेल्स फॉल होगा ना, फिर भी आप लोग सेफ है. Therefore, the formula actual sales minus break-even sales. But sometimes this formula fails. You have the formula of profit upon PV ratio. Okay, guys, do like my video, share my video, and please subscribe for awesome videos, both in costing and accounts, guys. Conceptual, logical understanding. Okay, see you in the next video.